आज हम करेंगे डिस्कस एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. So before discussing enthalpy of neutralization, we must have the concept of neutralization reaction. So what is meant by neutralization reaction? If an acid reacts with a base, for example, यहाँ पर हम लेते हैं एसिड HCl, यहाँ पर हम लेते हैं एक बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड. These two react, ये आपस में रिएक्ट होते हैं to produce salt and water. This type of reaction is known as neutralization reaction. So neutralization reaction is a reaction between an acid and a base to give salt and water. During this neutralization reaction, enthalpy change takes place. That means heat change takes place. And heat is evolved. Usually heat is evolved. This enthalpy change during neutralization reaction is known as enthalpy of neutralization. So enthalpy of neutralization can be defined as, इसको हम define कर सकते हैं as the enthalpy change when 1 gram equivalent of an acid is neutralized by a base, or ऐसे में बोल सकते हैं when 1 gram equivalent of a base is neutralized by an acid. ऐसे बोल सकते हैं when 1 gram equivalent of an acid is neutralized by a base, the enthalpy change which takes place there is known as enthalpy of neutralization. उसको बोलते हैं enthalpy of neutralization. But both the acid and the base must be aqueous dilute solutions. Let us take the example, ये HCl है, हम लेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट, बेस का हम लेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट. सो यहां पर मिलती है हमें सॉल्ट. यहां पर जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है दैट इज इक्वल टू -57.1 किलो जूल्स पर मोल. इसका मतलब है when 1 gram equivalent of HCl hydrochloric acid is reacted with 1 gram equivalent of a base, that means sodium hydroxide, the amount of heat evolved, जो यहाँ पर एनर्जी इवॉल्व होती है, हीट इवॉल्व होती है, that is equal to 57.1 kilojoules per mole. So this is here enthalpy of neutralization. ये यहाँ पर enthalpy of neutralization है. अब अगर हम लेंगे strong acids and strong bases, the enthalpy of neutralization in case of strong acids and strong bases is always same. ये always same होगा. आप कोई भी strong acid ले लो और कोई भी strong base आप ले लो, उनको आप आपस में रिएक्ट करो, वहां पर जो enthalpy of neutralization होगी that will always be same. That is equal to 57.1 kilojoules per mole. What is the reason for this? इसका simple reason है because strong acids and strong bases and the salts which they form, they are completely dissociated. Like this, ये HCl अगर हम लेंगे एक्वा सॉल्यूशन में ये बनेगा H plus Cl फार, ऐसे इस फार्म में ये होगा. ये बेस जो स्ट्रॉन्ग बेस है ये होगी Na प्लस और OH फार्म में, कंप्लीट डिसोसिएटेड फार्म में होगा ये. और जब ये साल्ट बनाते हैं NaCl, ये भी होगा डिसोसिएटेड फार्म में, और वाटर. अगर हम लेंगे यहाँ पर आप लेंगे सोडियम, ये सेम है ऑन बोथ साइड्स, सो ये कैंसिल हो जाएंगे, सोडियम क्लोरीन और क्लोरीन. अब जो ये एक्चुअल रिएक्शन रहती है ये रहती है H प्लस OH नेगेटिव गिव्स वाटर. ये एक्चुअल रिएक्शन रहती है, एक्चुअल रिएक्शन इस केस में. सो इसका ये मतलब है यहाँ पर जब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव रिएक्ट होता है, एक्चुअली यहाँ पर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव रिएक्ट होता है in case of strong acid and strong base. So amount of heat evolved जो होगी यहाँ पर enthalpy of neutralization, that is equal to 57.1 kilojoules per mole. So now we can say that enthalpy of neutralization is the heat evolved for the reaction. And enthalpy of neutralization is actually the heat
evolved for the reaction between H positive ions given by the acid and OH negative ions given by the base. With OH negative ions given by the base to form 1 mole of water. ऐसे हम बोल सकते हैं एक्चुअली एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है, is the actually heat evolved for the reaction between the H positive ions given by the acid with OH ions given by the base to form 1 mole of water. Because of this reason, we can say that this enthalpy remains constant, because the H positive ions and OH ions produced by the acid and base are always same. In a strong acid or strong base जो H positive ions और OH ions furnish करता है, they will always be same, उनका number same होगा. Because of that reason, del H जो होता है, जो enthalpy जो होती है, it remains constant for strong acids and strong bases. Or we can say that when strong acids are neutralized by strong bases, or strong bases are neutralized by strong acids. Okay.